Hello students, welcome back. Today we are going to start another topic of chapter 6, molecular basis of inheritance. In this chapter already we have discussed about the nucleic acid, then we have done the structure of DNA and how the DNA can be packaged inside the nucleus. Okay, so today we will study about the another topic, that is search for the genetic material. Up to here what we have discussed, that DNA is a genetic material. Okay, in today's time we know that what is a genetic material in body? DNA. But previously it was not found that what is a genetic material. पहले की स्टडी में क्या था, पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है. वो ऐसा एज्यूम करते थे कि इट मे बी प्रोटीन और इट मे बी सम जीन, बट दे वर नॉट श्योर अबाउट द कंपोजिशन ऑफ genetic material. Okay, so here different scientists came here and they performed the experiment. On the basis of that they tried to explain that what can be the genetic material. So in this sequence we will start with the first experiment, that is bacterial transformation, or we can say transforming principle. Okay, in your book you must have read about this transforming principle. So this principle, according to this principle, what is that theory? Okay, it was given by in 1928 by the Friedrich and Griffith. आपने पढ़ा होगा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, ही टुक द 2 strains ऑफ बैक्टीरिया. इन्होंने क्या किए, बैक्टीरिया की 2 strains ली. एंड व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही टुक फॉर द स्टडी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. Okay, and we know that this bacteria is responsible for causing the pneumonia. So what is the bacteria which is causing the pneumonia? That is Streptococcus pneumoniae, right? So it is a scientific name. So he took the strains of this Streptococcus pneumoniae, and what can be the strain? That is R strain and S strain. इन्होंने कौन कौन से strain ली? R strain and S strain. What does it mean? What is the meaning of R strain? R means rough strain. R का मतलब क्या है? Rough strain, and smooth means that smooth strain. Okay, if you see the structure of this Streptococcus pneumoniae, coccus means, whenever we are talking about the coccus means something in a spherical form, right? And strepto means chain of this coccus. जब हम क्या कर रहे हैं, चेन बना दे रहे हैं, इसको हमने कह दिया Streptococcus. So in case of rough strain, what happens that the structure is this type. It means that the outer covering is rough of the R strain, right? If we'll talk about the smooth strain, it means that this bacteria is covered by some membrane. Okay, it is covered by some membrane which is smooth, जिसकी वजह से कैसा में दिखाई देता है, smooth दिखाई देता है. And what is the composition? Mucopolysaccharide. What is it? Mucopolysaccharide. The outer membrane is made up of the mucopolysaccharide, and it appears as very smooth, and due to that we have given the name smooth strain or the S strain. Okay, so here he did his experiment by taking these 2 strains. So first of all what he started here, he took this R strain. Okay, which strain? This R strain, that is rough one. Now he injected this R strain into the mice. इन्होंने क्या किया, ये जो R strain है mice में inject कर दिया. When what he concluded and what he observed that mice is live, यानी कि जो mice है वो जिंदा है, चूहा जिंदा था. Okay, it means that if it is live, it is non-pathogenic. जो क्या हो सकते हैं, the things which are here, we am writing here, these are non-pathogenic, यानी कि ये कैसे थे, non-pathogenic. If we talk about the another one, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, he took the S strain, this strain, and when he injected this strain into the mice, what happened, he found that mice die, mice मर जाता है. So what is the reason? It concluded that this S strain is pathogenic. हमने क्या कह दिया,
ये जो एस स्ट्रेन है वो क्या है, पैथोजेनिक. इट मीन्स दैट दे आर विरुलेंट एंड दे वर द नॉन विरुलेंट. राइट, यहाँ तक हमने ये कंक्लूड कर लिया कि आर स्ट्रेन कैसे हैं. अगर हम किसी भी इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दे विल बिकम द नॉन पैथोजेनिक. इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. If we inject the S strain, that it will become pathogenic and it will get adverse effect to the individual. Right? Now, in another experiment, again he tried something more. So he took this S strain that were the heat killed. इन्होंने क्या किया, इसी S strain को क्या किया, heat kill कर दिया. Right? When he heat killed this S strain and again he injected into the mice, then what he observed here, that mouse were the live. Okay? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, this S strain is responsible for the pathogenicity. ये वाले केस में क्या था, S strain जब भी हम इंजेक्ट कर रहे थे इससे क्या हो रहा था, माउस मर जा रहा था. बट हमने इसी S strain को जब हीट किल कर दिया, अगेन वी हैव इंजेक्टेड इनटू द माइस, वी ऑब्जर्व दैट माउस इज लाइव. Okay, it means that by heating this S strain, it will become non-pathogenic. ठीक है, हीट किलिंग से क्या हो गया, ये क्या बन गए, नॉन पैथोजेनिक बन गए. राइट हियर. नाउ again what he did, he took another thing, he took the heat kill S strain. अब इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेन कैसी थी जो कि हीट किल थी, यानी कि हम उस स्ट्रेन को हीट किल कर चुके हैं. एंड अनदर वन ही टुक द लाइव आर स्ट्रेन. इट मीन्स दैट ही टुक दिस आर स्ट्रेन. When he took the combination of these two and injected into the mice, what he observed that mice died. Okay, अभी तो हम क्या कहते हैं, जो एस स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक है, लेकिन जब हम हीट से किल कर रहे थे तो वो क्या बन जा रहे थे, नॉन पैथोजेनिक. राइट, it means that this heat kill S strain is non pathogenic. R strain हमने जब किसी में भी माइस में इंजेक्ट किया, what it was doing, it was not doing any pathogenicity. It means कि R strain भी क्या है, non pathogenic. तो हमने ये assume किया, और they have assumed that if we will take these two non pathogenic bacteria and we will inject inside the mouse, so probably what will happen, the mice will remain live because both are non pathogenic. But the result they got here, it was totally different. उन्हें क्या मिला कि ये जो mice है वो तो मर गया. Okay, so what he concluded from his experiment, that something is there. Okay, what he said, something is there which is transforming this bacteria into the live S bacteria. कुछ ऐसी चीज है जो कहाँ से आ रही है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई चीज आ रही है, और इस आर स्ट्रेन को क्या बना दे रही है, लाइव एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रही है. क्योंकि आर स्ट्रेन तो क्या है, नॉन पैथोजेनिक, एंड एस स्ट्रेन आर पैथोजेनिक. अगर हम लाइव एस स्ट्रेन की बात करें तो वो क्या होती है, पैथोजेनिक. तो कुछ चीज ऐसी है, कुछ इनहेरिटेंस, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो एस स्ट्रेन से आ रहा है और किसको पैथोजेनिक बना दे रहा है, इस आर स्ट्रेन को लाइव आर स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रहा है. सो सेम थिंग, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट है जो कि क्या कर दे रहा है, आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है लाइव एस स्ट्रेन में. राइट, जब उन्होंने क्या किया, इस मरे हुए माउस पे ऑब्जर्व किया, सो ही फाउंड दैट इनसाइड हिज बॉडी ही फाउंड दिस एस स्ट्रेन एंड विच वाज अ लाइव. हमने तो लाइव स्ट्रेन एस स्ट्रेन दिया ही नहीं था, हमने तो हीट किल दिया था. तो इसका मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू मेक understand that what is that thing which is transforming from here to this side. Okay, and what is that thing which will transform this R strain into the live S strain which was found in the body of the dead mice. Okay, so यहाँ तक इन्होंने क्या conclude किया, same thing we have written, R strain bacteria has been transformed by the heat kill S strain bacteria. Okay, S strain ने किस क्या कर दिया, R strain bacteria में कुछ transformation कर दिया. And due to this what happens, we know that in case of एस स्ट्रेन जो कि स्मूथ स्ट्रेन थी, स्मूथ स्ट्रेन की प्रॉपर्टी क्या थी, इट वॉज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ओके, इट वॉज कवर्ड बाय सम म्यूकोपॉलीसेकेराइड विच वॉज द पैथोजेनिक. जब ये लाइव एस स्ट्रेन बन जाएंगे, ओके, जब ये एस स्ट्रेन क्या हो जाएंगे, हीट किल एस स्ट्रेन किस में चेंज हो जाएंगे, जब लाइव एस स्ट्रेन में चेंज जाएंगे तो उनमें क्या डेवलप हो जाएगी, पॉलीसेकेराइड की कोटिंग. Right, and it will become the live S strain. So that much is there in the first
experiment given by the Griffith. Okay, he was not able to make us understand that what is that transforming thing which is moving here, which is transforming. So to make them understand, another scientist came here, and this time 3 scientists came here. That is Avery, that Macaulay and Maclean McCarthy. You have to memorize these 3 names. So together they performed experiment, and this experiment is given for the characterization of this experiment. ओके यहाँ पे हमें उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन नहीं पता था. सो हियर टू एक्सप्लेन दिस बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसको बताने के लिए इन 3 साइंटिस्ट ने क्या दिया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन. टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड, दे अगेन कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट. सो विल स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड. राइट, यहाँ तक इन्होंने क्या किया, हीट किल एस स्ट्रेन with alive R strain. Same thing he took. इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी हीट किल S strain लिया एंड लाइव R strain. ये बता नहीं पाए थे कि क्या चीज़ ऐसी है जो क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म कर दे रही है. सो हियर he got idea, he added this proteases. What he did, he add protease in this combination. इन्होंने क्या किया, protease को हीट किल एंड के इस कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया. Why he added this protease? Because we know that what जब भी ASE, what is the meaning of this ASE? It means that it is related to some enzyme. Okay, it means that it is an enzyme. So what type of enzyme? Protease is an enzyme which is responsible for the breakdown of the protein. Right? किसके लिए responsible है, प्रोटीन के breakdown के लिए. He assumed that if the transforming thing, यानी कि जो यहाँ से इस R strain को चेंज कर दे रही है, वो जो चीज़ है, we don't know the name of that thing, वो जो चीज़ है अगर वो प्रोटीन होगी, if it would be protein, so it will be break down by this protease. आई बात समझ में? हमने क्या कहा, हमने कॉम्बिनेशन यही लिया. We have added this protease if the thing which is transforming from this heat kill S strain to the R strain to transform into the live S strain, if it would be protein, then this protease will break down this protein. क्या करेंगे, उस प्रोटीन को तोड़ देंगे जो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इस R strain को लाइव S strain में, यानी कि पैथोजेनिक बना दे रहे हैं. सो व्हाट ही फाउंड, व्हाट ही कंक्लूडेड दैट देयर वाज नो इफेक्ट, यानी कि अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अभी भी लाइव R strain लाइव S strain में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय एडिंग दिस प्रोटीज. इट मीन्स दैट जो चीज़ मूव कर रही है वो प्रोटीन तो नहीं है. नाउ अगेन ही टुक अनदर एक्सपेरिमेंट एंड अगेन ही टुक दिस कॉम्बिनेशन. दिस टाइम ही एडेड RNAs. What he did? He added RNAs. RNAs were what? It is a enzyme which is responsible for the breakdown of RNA. RNAs क्या करते हैं, RNA का breakdown करते हैं. Again he assumed that कि जो भी चीज़ मूव कर रही है, जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही है लाइव R strain को लाइव S strain में, वो क्या है, अगर वो RNA होगी, if it would be RNA, it will be break down by the RNAs. अगर वो RNA होगी, RNA की वजह से क्या हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. अगर ये RNA होगी, हम अगर RNA ऐड करेंगे तो वो RNA को तोड़ देगी. इट विल ब्रेक डाउन द RNA एंड इट वुड नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दिस लाइव R strain टू द लाइव S strain. तो उसका काम नहीं हो पाएगा. बट व्हाट ही ऑब्जर्व, अगेन ही ऑब्जर्व दैट देयर वाज नो इफेक्ट. अभी भी कोई इफेक्ट नहीं है. इफ देयर विल बी नो इफेक्ट, इट मीन्स दैट देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव RN टू लाइव S. इसका मतलब कि अभी भी लाइव R strain लाइव S strain में कन्वर्ट हो जा रही है. ओके, इट वॉज नॉट आर ऑब्जेक्टिव. नाउ इन द थर्ड वन व्हाट ही डिड, ही एडेड द DNAs. What he did? He added the DNAs. So this DNAs is responsible for what? For breakdown of the DNA. अब उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ ट्रांसफॉर्म कर रही है, चेंज कर रही है लाइव R strain को लाइव S strain में, अगर वो DNA होगी, it will be break down by the DNase enzyme. Okay, so as he added here in this combination, he found that there will be
some effect, and due to this effect these live R strain would not be able to convert into the S strain. जैसे ही हमने DNA ऐड किया, जो R strain है वो S strain में कन्वर्ट नहीं हुई. अगर live R strain S strain में कन्वर्ट नहीं होंगी, so what will happen? It means that there will be no pathogenicity. ठीक है, ये तो इसको पैथोजेनिक बना रहे हैं. सो हियर वी कैन से द थिंग विच इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम दिस हीट किल एस स्ट्रेन टू द लाइव आर स्ट्रेन एंड इट इज कन्वर्टिंग दिस लाइव आर स्ट्रेन इनटू लाइव एस स्ट्रेन, इट वुड बी द डीएनए. हियर वी हैव कंक्लूडेड दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए है जो क्या है, इनहेरिट कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है फॉर देयर कैरेक्टर, right? But again this theory was not accepted by the scientist during that time. Why? Because there was not so much awareness about these enzymes. People don't know more about the DNA, RNA, proteases, so they have not accepted this theory. Okay, so after that later on one more scientist came here who did different experiment, and that experiment was a Hershey and Chase experiment. Okay, in this that experiment was the acceptable one. Why? Because it shows that yes, DNA is a genetic material. So we will start with the another experiment, that is the Hershey Chase experiment. The third experiment, it was given by Hershey and Chase experiment, as it was given by two scientists, that is Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. So in this experiment what he did, he took the bacteriophages, okay, and this experiment is also known as the transduction, okay, as well as the bacteriophage infection. So here previously we don't know about the genetic material, right? So we were assuming that it may be some protein or it may be some DNA. Okay, but it was not clear because earlier we have done two experiments, but still it was not clear up to here. So for understanding this, what he took some bacteriophages, as these scientists know that there are some viruses which can attack the bacteria. उन्हें पता था कि कुछ ऐसे viruses होते हैं कि जिसको अटैक करते हैं, बैक्टीरिया को अटैक कर सकते हैं, right? So here we were talking about that viruses which is having the ability to attack the bacteria, and bacteriophage is one of the virus which can attack to the bacteria, and you must have heard about the E. coli. Okay, so where he can attack, it can attack to the E. coli, and it is using the machinery of this E. coli and multiplying its number inside the E. coli or the bacterium. So T2 that bacteriophage is there, right? So here we have taken that what is bacteriophages. Bacteriophages are those viruses which is having the capability to attack to the bacterium. Okay, and what is the structure of this bacteriophage? We have already done this one. Okay, some tail is there and this type of structure. Okay, and we know that this virus कैसे होते हैं? Viruses are living when they will enter inside any host body, and before that they are the non-living, and inside this viruses genetic material is present. So we can say DNA is a genetic material. Right now आज हमको ये पता है कि genetic material DNA, but that time they were not knowing about this genetic material. They know that something is there which can be transformed or which can be moved to the bacteria and will attack the bacteria. उन्हें पता नहीं था कि ये क्या genetic material present है. Okay, and the outer covering, it is covered by some protein, and this is known as capsid. Capsid is what? It is a protein which is present in case of viruses. Viruses में और कुछ नहीं होता है, बाहर की कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, and internal to that there is a genetic material which is DNA. So here what he took this bacteriophage as well as this E. coli. Okay, this E. coli, and we know that when it will infect this E. coli, जब भी क्या करेगा, इस E. coli को infect करेगा, what it is doing, it is sending its genetic material. Okay, I am showing with this red marker. This is a genetic material which is red,
एवरीथिंग विल रिमेन आउटसाइड, बाकी सारी चीज बाहर रह जाएगी, अंदर क्या मूव करेगा, ओनली द जेनेटिक मटीरियल, right? So the genetic material will move inside this E. coli and it will tend to multiply its number. जैसे ही क्या होगा, ये E. coli के अंदर एंटर करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ये बहुत जल्दी से अपनी नंबर इंक्रीज करेंगे. So from here so many DNA will form. Okay, DNA will form different DNA and after that it will covered by this protein. जैसे ही अंदर एंटर करेंगे, ये क्या करेंगे, अपने कवरिंग बना लेंगे प्रोटीन की, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द ई कोलाई. सो दिस इज द mechanism which takes place in this bacteriophage. This is the nature. So here we will understand that what is that thing. अभी हमको ये नहीं पता था कि ये क्या मटेरियल है, ये जो ई कोलाई में जाके अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है. So what it is? So from this experiment they concluded that this is nothing, this is a DNA which is inheriting from this viruses to the E. coli, right? How the machinery will perform here, we have discussed it here. And in this E. coli, ribosomes are present and these ribosomes are responsible for making the protein also, because in the bacteriophage there is a protein covering, right? So here, as we have said, he took the bacteriophages as well as for the infection E. coli bacterium. Okay, now what he did, he grew some viruses. He took some viruses on which medium, on the radioactive phosphorus. Okay, कुछ इन्होंने वायरस किस में ग्रो कराए, ऐसे मीडियम में जिनमें कि क्या हो, फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव हो. और some viruses they grew on the medium that is radioactive sulfur, जो कि कैसे होंगे, radioactive sulfur. And we know that what is the composition of DNA. अगर DNA होगा तो उसमें कौन सा चीज प्रेजेंट रहेगी, फॉस्फोरस या फिर सल्फर. It is clear that phosphorus group is present in case of DNA. It means that wherever there will be a radioactive phosphorus, it means that DNA is radioactive. ओके, क्योंकि डीएनए में हमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है. इफ यू टॉक अबाउट द सल्फर, सल्फर डीएनए में नहीं होता है. इट मीन्स दैट द डीएनए विल नॉट बी रेडियो एक्टिव व्हेन द मीडियम कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव सल्फर. अगर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर है तो उसका मतलब है कि हमारे पास डीएनए नहीं है, बिकॉज डीएनए डजंट हैव एनी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर. सल्फर इज प्रेजेंट वेयर, सल्फर इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन. ओके, सल्फर कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन में, एज अमाइनो एसिड्स. We are having different types of amino acids. So here the amino acid which contains the sulfur here, so this sulfur present in case of radioactive protein, right? Now 3 steps are there. The first step is infection, second step blending, and third step is centrifugation. So here I have shown with 2 different types of radioactive phosphorus as well as radioactive sulfur. In the first one we have taken the radioactive sulfur and in another one we have taken the radioactive phosphorus. Here we have taken the bacteriophage which will infect the E. coli. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, इन्फेक्शन. सबसे पहले जो हमारे बैक्टीरियोफेज, ओके, ऐसा बैक्टीरियोफेज जो किस मीडियम में है, रेडियोएक्टिव सल्फर में. It means that as it will infect this E. coli, what will happen? It will send its genetic material. As it will send its genetic material, बाकी सारी चीजें बाहर रहेंगी, अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा. सेम थिंग हैपन हियर इन केस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस. इन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इट मीन्स दैट देयर इज नो डीएनए, इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज अ सल्फर. ओके, इट मीन्स दैट समथिंग इज, प्रोटीन इज मूविंग. तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल एंटर किया. So first thing, infection, the radioactive phages, that is radioactive sulfur phage and the radioactive phosphorus phage will attack to the E. coli. First step is completed. Now again the viral coats, as we have said, जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, बाहर की जो कवरिंग होती है, जो कैप्सिड होती है, वो बाहर ही रह जाती है E. coli के, वो अंदर एंटर नहीं करती है. इन्फेक्शन के बाद what happens, the capsid doesn't enter inside the E. coli, only the genetic material will go inside the E. coli, right here. So what we are doing blending. It means that we are mixing them together. Okay, we are mixing this bacteriophage with E. coli. अब जब blending होगी, mixing होगी, तो क्या होगा, ये बाहर रह जाएंगे
और जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर आ जाएंगे इन बोथ द केसेस, वेदर इट विल बी अ रेडियोएक्टिव सल्फर और द रेडियोएक्टिव phosphorus medium. Right? The third step which we will discuss here is centrifugation. Now what is the role of centrifugation? In centrifugation what happens that due to the again spinning, यहाँ पे तो हमने blending की mix किया किसी चीज को, now we are going for the spinning. Spinning का मतलब क्या, बहुत तेजी से there will be a rotation of this medium. अब medium को हम अगर centrifuge करते हैं, so what happens as it is happening in a washing machine, something is सेंट्रीफ्यूज, समथिंग इज स्पिनिंग, कपड़े स्पिन करते हैं, उसी तरीके से हमने इस मीडियम को भी स्पिन कराया. नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, द वायरस पार्टिकल्स सेपरेट. अब जो वायरस पार्टिकल्स होंगे वो अलग हो जाएंगे. Okay, virus particles get separated and what will happen, only the radioactive DNA will get inside the E. coli. Okay, as we have said कि अंदर कौन एंटर करता है, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल here. So due to this what will happen, bacteria which are infected with the virus and that had radioactive DNA, जिनके पास कैसा DNA था, radioactive DNA, यानी कि it means that the phosphorus one, okay, the phosphorus one will be detected in the cell. इस सेल के अंदर क्या होंगे, ये सेल कैसा हो जाएगा, so now the cell will become the non radioactive. Okay, why non radioactive? Because it is not having any phosphorus, because phosphorus is present only in case of DNA, right? So here we can say this E. coli cell will become non radioactive and this one which is having the radioactive phosphorus medium, they will become the radioactive cell. It means that it is having the proper radioactivity which is due to what, which is due to the radioactive phosphorus, right? So same thing we have written here, no radioactive S35 is detected in the cells. कोई भी radioactive cells नहीं होंगे. For example, we have formed here as a medium. In this medium, you can see that the medium which is having the radioactive sulfur, something is supernated. कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, bottom में बैठ जाएंगी, which will become the pellets. And the things which are deposited at the top, it will be the supernatant. So here this E. coli will act as a pellets and these bacteriophage will act as a supernatant. And due to this phage, because as it contains the sulfur, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है इस मीडियम में, it means कि इसके प्रोटीन कैसे होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे. इस केस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव होंगे और सेकेंड केस में इसके we can say जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव होगा. ओके, अब क्या हो रहा है, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करा रहे हैं, एट दैट टाइम दिस रेडियो एक्टिव सल्फर विल नॉट एंटर इनसाइड द सेल. रेडियो एक्टिव सल्फर सेल में नहीं एंटर करेगा, कहाँ रह जाएगा, इट विल रिमेन इन द कैप्सिड. अगर कैप्सिड में रहेगा तो दीज आर द कैप्सिड. Okay, these red particles which will act as a supernatant and due to this the supernatant will become radioactive. यहाँ पे जो supernatant होंगे वो कैसे हो जाएंगे, radioactive हो जाएंगे. Okay, but if you will talk about the second medium, in this medium again at the bottom there is a pellet which is having the E. coli cells and the radioactivity is present in this E. coli cells. अब radioactivity किसमें नहीं होगी, supernatant में नहीं होगी. Why? Because जो भी हमारे पास फॉस्फोरस था वो किस में एंटर कर गया है हमारा, एज अ जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द ई कोलाई. सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड दैट दिस फॉस्फोरस कंटेनिंग थिंग कैन एंटर इनसाइड द ई कोलाई. Okay, and this one is a DNA and DNA is a genetic material which is responsible for infecting the virus and it will multiply its number here. ओके, और दूसरा हम क्या कह सकते हैं, प्रोटीन क्या रहता है, सिर्फ बाहर रह जाता है कैप्सिड के साथ पे, ये ई. कोलाई के अंदर एंटर नहीं करता है, इसलिए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है. ओके, सो टुडे वी हैव डन अबाउट द एक्सपेरिमेंट विच आर रिलेटेड टू द एविडेंसेस ऑफ द डीएनए, कि डीएनए ही हमारा हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है. ओके, नाउ in the coming session we will understand more about the structure of the RNA and related to these their experiment and how we can say the DNA is replicating and how there will be a proper DNA to RNA, RNA to protein. So we will study all about it. So that's all for today. Thank you.